You all must be knowing it. You all know that. Okay, so duplicate data generated होता है. So what is the duplicate data? For example, I am just storing the one student information in a file. So I can make the 2-3 copies in different locations in same single file, or maybe I can also store the data, same similar student data in one file, and also we can maintain the same student data in another file also. So like this I can maintain in multiple files. Okay, multiple files में redundancy means duplication of data. Yes. Okay, so suppose if a student information, if it is stored in multiple files, file system इसके बारे में बात कर रहे हैं. So if we stored multiple locations में same student information store किया, so generally already as a computer student we can understand that what is the difficulty for this. Suppose मैं student name change करना है. Okay, so student name, for example मैं student data admission का files में है, and student data account section में है, student data suppose office में है, student data at exam section में भी है. Now suppose student name I want to change it. Okay, I want to change the student name. Suppose क्या करना पड़ेगा? So फाइल है, एक फाइल ओपन करना पड़ता है. मतलब suppose एग्जाम सेक्शन के पास जाना है, पहले इसके पास जाके so give example of file systems. This is just what I am discussing is file systems. Okay, so suppose if I stored data, students data in a exam file में store किया generally. Okay, so exam file में store किया, and account section का पास एक फाइल है, उसके फाइल में store किया, department फाइल है उसमें store किया, as well as some admission form office में भी उनके पास में मैं data store किया. So what is the difficulty for this? Data is stored, okay, in exam file as well as departmental file, and as well as in the office file, accounts file. So suppose I want to change the data of a student, एड्रेस चेंज करना है, नहीं तो उनका पेरेंट्स का नंबर चेंज करना है, नहीं तो स्टूडेंट नेम ही चेंज करना है, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है. सो आई वांट टू चेंज द नेम. सो क्या करना पड़ता है? पहले अकाउंट सेक्शन के पास जाना है, उधर जाके उनका भी फाइल ओपन करना है, उनको फाइल ओपन करके उसमें अपडेट करना पड़ेगा. एंड सिमिलरली आई वांट टू गो फॉर ऑफिस एंड आई वांट टू so inform them you just change my name, and वो ऑफिस में भी चेंज करना पड़ेगा. एंड डिपार्टमेंटल जाने हैं, डिपार्टमेंटल आने के बाद डिपार्टमेंटल फाइल ओपन करके उसमें भी अपडेट करना पड़ता है. एंड सो लाइक दिस you have to so so go to the all various places, and you have to request to change the data, modify the data. Okay, so this is the actually the drawback. Okay, so this is the drawback of the sorry, somebody says Suhas go. Okay. Okay, so I will continue. Don't worry. Because of the data is scattered in various places, and because of we are maintaining the data in a file system, so क्या हो रहा है? Data हम हर बार हर जगह पे जाके modify करना पड़ता है. Means when the data is duplicated, 4 जगह पे, okay, in 4 locations में data हम store किया, duplicated data है. So क्या हो रहा है? हर जगह पे जाके modify करना पड़ रहा है. Okay, that is the actually difficult. Okay, so this is the drawback of the file management system. Okay, so that is
Okay. So this is the drawback of the file management system. Okay, when the data is in the redundant. Okay, data redundancy means duplicate. Okay, and inconsistency. Inconsistency means अभी मेरे 4 जगह पे मैंने फाइल डेटा स्टोर किया फाइल सिस्टम में. सपोज एग्जाम सेक्शन में मैं डेटा चेंज किया, मेरा नाम है, दूसरा नाम चेंज किया. सो अभी वो डेटा एग्जाम सेक्शन का डेटा एंड अकाउंट सेक्शन का डेटा मैच नहीं होता है, बिकॉज एग्जाम सेक्शन में आप अपडेटेड किया, एग्जाम अकाउंट सेक्शन में चुना डेटा है. सो इट इज मिसमैचिंग. Okay, it is not matching at all. So that's why, so the file system ये one of the, this is also one of the drawback. Okay, so data redundancy अगर रहेगा तो प्रॉब्लम रहता है मॉडिफाई करने के लिए. अगर सपोज इफ यू फॉरगेटन टू मॉडिफाई इन वन लोकेशन, सो डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आता है. डेटा इनकंसिस्टेंसी मींस कंसिस्टेंटली डेटा इज नॉट मेंटेनिंग इन ऑल लोकेशंस. सेम डेटा ऑल लोकेशंस में नहीं है. Okay, so this is the one of the drawback. Next is difficulty in accessing the data. So suppose if you are maintaining the file system, okay, so data access करना बहुत मुश्किल होता है. Suppose luggage, suppose some university inspection आया, so they ask some student information. So I want to access that information immediately. I want to take that data immediately. How can it is possible? So it is very difficult. Okay, so if file system is there, then so you have to compulsory, so compulsory have to open it and उसका name के लिए ढूंढना पड़ता है फाइल and उसका open करके देना पड़ता है. Okay, so and this is very lengthy process. Suppose if you are maintaining central database, so data accessing problem आता है नहीं. Okay, so just to open the so file and means just to you just enter the name, roll number or anything. So unique ID जो भी है वो unique ID से हम एंट्री किया तो ऑटोमेटिकली उनका complete history we will get it. Okay, so accessing is very easy in the databases rather than compared to the so file systems. Okay, this is the so second drawback. Third drawback, redundancy, inconsistency is two drawbacks, and the third one is difficulty in accessing the data. It is another drawback. Next one is data isolation. Okay? Data isolation. Data isolation means so multiple files from multiple formats. Okay, suppose एक फाइल में मैंने दूसरा फॉर्मेट में सेव किया, दूसरा फाइल में दूसरा फॉर्मेट में सेव किया. नाउ आई वांट टू so combine this. Okay, so it is very difficult to combine the data. Okay, so data isolation and integrity problems are there. Integrity, combining the data. So these are the different problems. Because so time is going on, I will just conclude this topic. Just 5 minutes are remaining. Just in 2 minutes I will conclude this. Okay. Okay, so integration problems. Suppose I want to check, I want to add some customers information. Okay, so suppose customer का minimum balance रहता है. Okay, just example you see here, what the example is given. It is integrity, consistency become varied in the programming code rather than being started explicitly. Hard to add new constraints on changes existence once. So integrity problems mean, for example, okay, suppose मेरा बैंक अकाउंट है. Okay, so बैंक as per bank policies minimum balance 500 मेंटेन करना पड़ता है. Okay, so क्या होता है, मैं अगर वो रूल हम लगाए नहीं, okay, so फाइल सिस्टम में अगर सपोज एक रिकॉर्ड के लिए लगाए, so हर डेटा एंट्री करने में हम हर बार चेक करना पड़ता है फाइल सिस्टम में, ये बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं क्या नहीं, मिनिमम बैलेंस एंट्री कर रहे क्या नहीं, मेंटेन कर रहे क्या नहीं, हर बार चेक करना पड़ता है. ओके, व्हेन a new data is entering into the databases, okay, or when you are integrating the data into the existing data, so always the constraints should be matched. Constraints रहता है, conditions रहता है, that conditions always we have to match it. Okay, so
That's the problem with the file management system. Okay, so constraints matching, it is very difficult. Okay, so but when you are go for the databases, क्या होता है, constraints हम easily constraint check कर सकता है. अगर suppose if I made a one particular constraint on particular one column, suppose मैंने age का column constraint set किया, so age should be always greater than 18 years. Suppose those who are students, they are enrolling into the engineering courses first year. So I want to add this constraint. That particular student age should be greater than 18 years. Okay, that is the constraint I am going to add. So whenever the new student, whenever the new record is automatically adding into that, so it will by default check that constraint. डेटाबेस में वो प्रिविलेज है, बट फाइल सिस्टम में वो प्रिविलेज हम अलाउ करता है नहीं. Okay, it will not allow to the type of privileges. Okay, so that is the problems with integrity problems. Okay, these are all called the integrity problems. Okay, so these are the just few integrity problems, and we have some more difficulties are there for the file management system. We go for this because of time is going on, limit ज़्यादा नहीं है. एक मिनट. Atomicity and concurrent accessing. I just explain atomicity means failures may leave databases in a inconsistent state with the partial updates carried out. Atomicity means, for example, एक ट्रांसैक्शन डिटेल्स मैंने स्टोर करना है. ओके, सो स्टोर करना कैसे, सपोज उनका ट्रांसैक्शन फॉर एग्जांपल बैंक एग्जांपल ही लेंगे. सो बैंक में मैनुअली, सपोज इफ यू आर फॉलोइंग मैनुअल, ओके, मैनुअल सिस्टम फॉलो कर रहे, फाइल सिस्टम में फॉलो कर रहे, क्या होता है, सपोज इफ कस्टमर इज केम, he withdrawn some amount from the बैंक, चले गए. सो इसके बाद क्या होता है, वो रिकॉर्ड मैंने कैसे इधर मैंने मेंटेन किया, फाइल सिस्टम में मेंटेन किया. ओके, फाइल सिस्टम में मेंटेन किया तो क्या होता है फाइल सिस्टम में, सो अगर सपोज उन्होंने आके में कुछ प्रॉब्लम हुआ है उनका ट्रांसैक्शन में, सपोज ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है उनको, वो नहीं है, दूसरा का आदमी आके वो फाइल साइन कुछ नहीं किया, सो उसका अमाउंट लेना पड़ता है. तो क्या होता है, वापस उनको बुलाना है, सो उनका अमाउंट लेना है, फिर फाइल में जाके हम अपडेट करना पड़ता है. तो एटॉमिसिटी मींस एट ए टाइम ये होता है नहीं. ओके, सपोज इफ यू मेंटेन द डेटाबेसेस, एटॉमिसिटी मींस इफ द डेटा इज देयर, so and if you are done some transactions, so and suppose if you due to some any technical issues the transaction is cancelled, automatically the database में मतलब accounts में जो amount है वो automatically so हमारा back आ जाता है. Okay, so that is atomicity. Okay, failures कुछ हुआ तो database में वो automatically हम back आ जाता है. And concurrent access by multiple users को हम so concurrently accessing हम नहीं दे सकता है file management system में. So that's the one of the problem with that. Okay, that is the example. Okay, example of the so concurrent means parallelly हम नहीं दे सकते. And next is security problems are there. Security problems means security problems means suppose फाइल को कुछ सिक्योरिटी नहीं रहता, जनरल फाइल सिस्टम में कोई भी आके ओपन कर सकता है, कोई भी आके मॉडिफाई भी कर सकता है, उसमें कुछ ऐसे सिक्योरिटी नहीं रहता है. ओके, so but when you go for the databases, when you are using the databases, definitely it will have that privileges. Okay, we can access some privileges to the different users, so that user can able to access that part of the data only. Okay, so security problems also be due to that reasons we go for the databases. These are the actually drawback of the file management system. Okay? So these are the drawbacks of file management system. Is first one is data redundancy and inconsistency, and as well as difficulty in accessing data, and data isolation, and as well as integrity problems. And next is atomicity
of updates, atomicity of updates, and atomicity actually we discuss it later. Actually it is very one more different concept, we'll discuss it. Okay, concurrent accessing, multiple users के लिए हम multiple concurrent accessing दे सकता है, and security problems भी रहता है, we have some security issues also be there. Okay, so this, because of these all the problems are facing in the file management system, so we are going for the databases. Okay, so I think everybody understand what is a file management system. Okay, and what is the disadvantage of file management system rather than the databases. Okay, so in next class we go for different levels in the databases. Okay, and before leaving the class, today's lecture code is I want to share the today's lecture code. It is 5833. Okay, today's lecture code is 5833. Everybody please note this. You just enter this code while you are uploading your attendance, and also take the screenshot. As I told that take the screenshot of participants list. उसमें आपका नाम आना चाहिए and roll number, date, आज का date आना चाहिए, and upload on both attendance link जो है उसमें upload करना है, as well as अभी Google Classroom में मैंने assignment create किया, उस